Hello, friends. Since last point, we have discussed about how Greek had achieved independence and established their own nation state. Today, we are going to discuss about the feeling of romanticism in the nationalism. It is not only the wars, protestations, movements through which one can express their feeling of nationalism. And there are many ways, and one of them was their own culture, the identity of an individual, the attitude, the spirit of an individual, by which one can express their romanticism. So, romanticism is a cultural movement to develop a particular form of activities in form of nationalism sentiment. So, one German philosopher, John Gottfried, has rightly said, and he has also given example regarding it: folk song, folk dances, uh, then literature. So that was the part of the cultural movement, and through which one can understand uh, the feeling which came from the folk song, then folk dances. Therefore, uh, the German people that they walk zest and walk das. These are the German words which are related to folk dances and folk songs, which are given by the John Gottfried. Earlier, we have discussed that uh, Poland was divided and partitioned into three category, but Russia had gained complete control over the Poland. So now the Russian language was completely uh, completely implemented in the economy of Poland. Yani it became official language in Poland. For example, in school, offices, government offices, then a religion point of view, everywhere only Russian language is executed. So, from the cultural point of view, it is not right because language is also a part of a culture through which one can develop a cultural movement in a way of life. So, by her, uh, and from that point of view, yani the German people had suppressed, Polish people had suppressed the movement to the Russian, and bishops, priests, yani those who are praying the gods, they are now giving importance to the Polish language and preaching through the Polish language only. And therefore, German people and the Russian people had punished them and sent them to the Siberian jail. कि भाई जब उन्होंने ये सप्रेस्ड किया तो उनको साइबेरिया की जेल में डाल दिया। एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो कैरोल कर उनका नाम है कैरोल करपंस्की, जो फोक डांसेस, फोक सॉन्ग्स उनको लेकर इन्फ्लुएंस होकर वो अपना कल्चर जो है वो डेवलप करना चाहता था, बट सप्रेस्ड। इट इज़ नॉट डन बाय द एन इंडिविजुअल। तो अगेन एक और पॉइंट्स आता है हमारे पास डिस्कस करने के लिए हम एट दैट टाइम, कि क्यों लोग जो है वो रोमांटिसिज्म्स की फीलिंग्स को बढ़ा नहीं पा रहे थे, डेवलप नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ हंगर, हार्डशिप, एंड इनमें से हमें रिवोल्ट निकालना है, यानी प्रोटेस्ट करना है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय एन इंडिविजुअल। So at that time in 1830,
popular popular revolt was carried many popular revolt were carried out by many people, but the uh, many problem emerged in European countries simultaneously for the middle class peoples. For example, increasing populations, yani flow of the population in European countries is day by day increasing, and according to the population the job seekers are also increased. So as the job opportunities are not created according to the population, so the problem is creating of unemployment. Again, the machine made goods and very at the very cheap price coming from the England, which also creates steep competition to the local producers. So this one is also a major concerns for the people, those who are coming from the rural areas, and therefore they migrated in search of jobs to the cities. Now the cities become crowded. So these are the major problems arise in European countries. So therefore, it such situation become very worse, very worse. And, at that time, Louis Philippe, he himself uh, got flee from this situation and removed. वो भाग गया वहाँ से, सिचुएशन को समझ नहीं पाया, हैंडल नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि भाई अभी भी यूरोप जो वर्कर्स थे उनको क्या है कि ड्यूअल ऑब्लिगेशंस जो था वो जो है वो करना पड़ता था, एंड इट इज डिफिकल्ट. So 1848 was one such year where when food shortages were created, and it is very difficult for now workers to obligated towards the government, towards the conservative people in form of paying dual obligations, tax as well as we can say work on that on the aristocratic people's land. So right to vote, right to work, the workers started protest for them. So earlier the same situation was arrived in Silesia in 1845. So many viewers were coming from their home and marched towards the contractors and their mansions also, to those who are owners, and giving them works. But actually, what happened? The demand was not fulfilled because the workers are paying higher. Workers uh, wanted that wanted to pay them higher wages, and at the end of the result, 11 workers, approximately 11 workers were shot there. तो ये सिचुएशन बढ़ती जाती है, स्टोरी भी हमारे आगे जाती है. In 1848 actually the revolt now were the carried out by the group of the people which are called liberals. तो लिबरल में कौन कौन आते हैं? तो एजुकेटेड पीपल है वहाँ पर, प्रोफेशनल लोग है, समझदार लोग है, इंटेलेक्चुअल पीपल है जो समझते हैं कि नेशनलिज्म क्या है, कैसे ले जाना है. वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी द डोमेस्टिक पीपल जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली बिकॉज ऑफ इलिटरेट पीपल है, तो उनको भी साथ लेकर चलना है एंड नेशनलिज्म की फीलिंग्स जो है उसे स्प्रेड करना है. सो व्हाट वर देयर मेजर इंटेंशंस, यानी तक पहले जो ग्रुप था वो मिडिल क्लास का था एंड they wanted to establish nation state, not princely state, not estate general where first second third category ऐसे कैटेगरी बनाई जा रहे. they wanted to establish nation state, independent state, जहाँ सबको अपना अपना राइट्स मिले. उसमें कौन कौन सा? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, देन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जो है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट हो. तो दीज आर द मेजर इंटेंशन फॉर
दिस काइंड्स ऑफ पीपल। तो उनकी भी एक स्टोरी है जर्मनी के रिलेटेड। हमें मालूम है वहाँ पर फ्रैंकफर्ट ट्रीटी जो है वो होती है थ्रू मेकिंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस ऑफ मिडिल क्लास पीपल, एजुकेटेड पीपल, businessmen, traders, many, and they decided to vote and making a all German national party। वो बनाते हैं 831 मेंबर जो है वो पार्लियामेंट में इलेक्टेड होते हैं। they so ultimately they won, they got good and ultimately they got good support from the workers class, peasant class, artisans who are very poor in form of we can say standard of living। बट अल्टीमेटली क्या आता है, जब पावर आता है तो सबको यही मानना होता है पावर का, तो पावर का सदुपयोग नहीं करते, मिसयूज ही करते हैं सब। तो अल्टीमेटली क्या है, वो पावर में आ गए तो वर्कर्स पेजेंट्स फार्मर्स डिमांड्स वर नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस। सो नाउ अब देखो, द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन द यूरोपियन कंट्रीज आर द और ऑफ द बॉटम क्लास पीपल, वर्कर्स पेजेंट फार्मर्स। तो अब उन्होंने उनका सपोर्ट जो इनके लिए था, मिडिल क्लास पीपल के लिए था, यानी एजुकेटेड के लिए था, वो हटा दिया। तो अगेन द सिचुएशन बिकम वर्स एंड अल्टीमेटली अब सबको पता चल गया कि इन दोनों में क्या हो गया कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब तो डिवाइड हो गए उनकी ताकत, पहले एकजुट थे, यूनाइटेड थे, अब पावर की वजह से वो डिसयूनाइटेड हो गए। Then the ultimately conservative people sent troops and the situation became as it was earlier in the European countries। होना अच्छा गया। And the another thing is that the issue becomes same regarding the women representative। उनको तो अभी राइट टू वोट मिला ही नहीं था, दे वर टिल कंसिडर एज द पैसिव वोटर्स, राइट टू वोट था ही नहीं। वो उनकी सिचुएशन तो डेवलप हुई ही नहीं थी। वुमन कांट डू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, दे हैव नॉट राइट एनी द आर्टिकल और वॉट एवर इन न्यूज पेपर्स, दे हैव नॉट एनी राइट regarding their own express their own opinion। But now after revolution, now the women of European countries were attending political meetings, doing demonstrations and provide motivation to every country कि भाई एक वुमन क्या कर सकती है इंडिपेंडेंस के लिए। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन कि एट द एंड ऑफ द लास्ट ऑफ द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी में क्या हुआ, तो वुमन वाज कंसिडर एज पैसिव सिटीजन, ओनली ऑब्जर्वर्स, स्टैंड अप इन अ गैलरी पार्लियामेंट। बट दो चेंजेस हुए वहाँ पर, क्या, तो सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एस्टैब्लिश। बॉन्डेड लेबर को एस्टैब्लिश यानी एबोलिस्ट किया गया, एबोलिस्ट रिमूव कर दिया गया। एंड हंगेरियंस ग्रांटेड अथॉरिटी एज सेल्फ गवर्निंग स्टेट। जो पहले हंगेरियन जो था वो सेल्फ गवर्निंग नहीं था, नहीं किसी के दबाव में आगे काम करता था, इन्फ्लुएंसिंग स्टेट था। नाउ इट बिकम सेल्फ। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी आर इन टॉपिक नंबर 6, that the making of Germany and Italy, we are discussing tomorrow or the day after tomorrow. Please read it very carefully and then we will meet. Tomorrow I will give you some questions related to these points and another remaining points. So please write in your notebook, and if you are unable to understand, then please message, reply to me, and stay in touch with me. This is very important for you and me also. Thank you.